Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome and good afternoon from Gets Pharma Learning Cell. As you know, amid COVID-19 scenario in Pakistan, chronic diseases and need for various surgeries have not ceased to affect our patients. In fact, this has become a challenge for healthcare providers and healthcare practitioners to address these challenges and these issues for our patients. To address this challenge, we bring to you experts from their field to discuss and provide us with a way forward for these patients. Today, as you know, our topic of discussion is prioritizing and management of acute urinary retention and benign prostatic hyperplasia patients during COVID-19 scenario. हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. He is a renowned consultant urologist. His name is Associate Professor Dr. Liaqat Ali from Institute of Kidney Disease, Hayatabad Medical Complex, Peshawar. Additionally, he is also Director Academics at IKD, and with him he has a vast experience of teaching undergraduate and postgraduate medical students, and he is also in charge of the education department of IKD. So without any further ado, I would like to request our consultant urologist, Associate Professor Dr. Liaqat Ali, to start with the presentations. Over to you, sir. Thank you very much, ladies and gentlemen. मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरे viewers कौन हैं, doctors हैं, patients हैं, या I expect कि मैं पूछा था तो they were postgraduate residents. So let me introduce. आपने introduce कर लिया. Thank you very much, Gets, for initiating this Sadqa Jariya. I'm Dr. Liaqat and I'm Associate Professor of Urology. And my lecture is very brief. And the learning objectives are the brief overview of the benign prostatic hyperplasia, COVID-19 as the age era we are facing of this COVID-19 and BPH, and frequently asked some questions. So let's start my presentation with the prayers. Ya Ghayasul Mustaghisin. Allah हम सबको इस बीमारी के, इस वबा के शर से महफूज रख. जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमाए. As you can see, today is the era of telemedicine. Like everybody who has been watching me, they might be wearing masks and also protective equipments, but I was in my office. So एक अजीब सा ज़माना आ गया है in this era of masks. तो बकौल मीर तकी मीर ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की स्कार गहे शीशा गरी का. If you look into this classical painting and you would like to appreciate that here is the patient of the prostate, here is the disease, and there are so many people treating this one patient. A surgeon, a physician, a specialty man, and even priest. So why there are so many people treating this one patient? The answer is only one, and that is to restore and improve the quality of life, because it's well said by Aristotle that quality of life is more important than life itself. So for the just an overview, prostate is a male sex gland which lies beneath the bladder neck, and on normal weight is 20 grams. And all the diseases of the prostate manifest itself by its enlargement. Like this young chap is saying, oh yeah, well, my dad's prostate is more enlarged than your dad. So BPH is the most common tumor of benign tumor of the male. Bothersome loads can occur in 30% of male with older than 60 years. It's very simple to diagnose, ability of the effective drugs. But the last line is very important, that the frequency of acute urinary retention in West is 6 to 8%. But unfortunately, in Pakistan is almost 60%. This is an era of evidence-based medicine. So let's answer some questions according to the evidence base. First question which is usually asked is a BPH a progressive disease? Yes, based on available data, BPH can be considered as
progressive disease. And the specific risks are age, PSA level, and prostate volume. Then how we assess the prostate? जब आप prostate का मरीज आपके पास आता है मेरे डॉक्टर हजरात, स्पेशली जो रेजिडेंट्स के पास जो बैठे हुए हैं यहाँ, या अगर कोई आम पब्लिक सुन रही है जिनको पेशाब में शिकायत होती है, how it is assessed? There are some recommended, there are some optional investigations. Recommended investigations is clinical history and validated IPS system to score. Examination, especially the digital rectal examination, that is MRSD, urinary, serum PSA, urea creatinine, ultrasound abdomen and pelvis with post-void residual urine, 24-hour frequency chart, and uroflowmetry. Then these are some optional investigation like urodynamics and flexible cystoscopy. Treatment objectives, like I've said, the main aim is to improve the quality of life. So one is improve the BPH symptoms, prevents complications such as acute urinary retention, reduce the need for the BPH-related surgery, and also the main important quality of life. The management can be classified into conservative or the behavioral management, medical therapy, and surgery. Medical management, जिसको हम कहते हैं कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, उसकी इंडिकेशंस नोट कर लें कि वो मरीज जिनका माइल्ड टू मॉडरेट IPSS हो और बॉदरसम क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, पेशेंट फिट ना हो सर्जरी के लिए, पेशेंट विलिंग ना हो सर्जरी के लिए, या पेशेंट is waiting for the surgery. And alpha blockers is the first line medical treatment in management of BPH. All of the alpha blockers are equally effective and well tolerated. The temsalocin usually do not require the dose titration. 5-alpha reductase inhibitors indicated in progressive BPH, especially the combination treatment. Then here are the few pictorial views I have added. Indication of surgery क्या है prostate में? तो number 1 is severe IPSS, मरीज को अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो डॉक्टर के उसके मुताबिक, ये सबसे important. Acute urinary retention, that is classified as precipitated and spontaneous, इसका जिक्र बाद में आएगा. Recurrent UTI due to enlarged prostate, overflow incontinence due to enlarged prostate, recurrent hematuria due to enlarged prostate, bladder stone formation due to enlarged prostate, bladder diverticular formation due to enlarged prostate, azotemia due to enlarged prostate, and failed medical treatment. Then there are different options for the prostatectomy, which is beyond the scope of this presentation, so I'm not going to discuss that. Now, unfortunately, we are facing this pandemic of COVID-19. ये आज की फिगर्स हैं, तकरीबन 18,53,500 मरीजों को वर्ल्ड वाइड कोविड-19 डायग्नोज हुआ है. 1,14,000 अफराद जान बहक हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है मेजॉरिटी उनमें से ठीक भी हुई है जो बीमार थे. पाकिस्तान के कंफर्म स्टेटिस्टिक्स आज के जो हैं, they are 5,374 people are affected by this corona, and majority are from the Punjab and as well as Sindh, and unfortunately 93 people have died because of this corona. So this crisis is very important. This crisis is going to define our era. As we are still, I would say, like in the line of fire, we being the combat people against offering the services against the corona. I'm the member of the combat team. So many things are not yet decided. But I'm going to discuss this presentation for 3 sets of the population, prioritizing the management of BPH patient due to the corona epidemics. तो मेरा मुखातिब 3 किस्म के लोग हैं. Symptomatic BPH not on treatment, वो लोग
जिनको पेशाब में बंदिश की शिकायत है लेकिन वो कोई इलाज नहीं ले रहे और लॉकडाउन में है, सिम्टोमेटिक पेशेंट ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट, जो अपने किसी डॉक्टर के मशवरे से ऑलरेडी ही कोई इलाज ले रहे हैं, एंड पेशेंट विद एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन और इम्पेंडिंग एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, जिनको रिटेंशन डेवलप होने वाली है या उनको हो चुकी है या खुदा न खास्ता हो सकती है. So the aim of the treatment for the first two population is the prevention of urinary retention. And for the last group, it is the emergency treatment of acute urinary retention due to the BPH. So I'll share some of the guidelines for the patient very briefly, आसान लफ्जों में, आसान भाषा में, guidelines for the doctor, and also will discuss the definitive treatment and the time. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, symptomatic patient not on treatment. As we all know, season is changing, especially in the northern part and always in the southern part. Due to this variation in season, there are chances of acquiring common cold or flu. And whenever you go to your GP or your family physician, or even a medical specialist, he's going to prescribe antitussive, yani cough syrup, and anti-allergic for you. These both medications are associated with the progression of the symptoms because of their anticholinergic effects. So, जिन लोगों को पेशाब की बंदिश की शिकायत है और वो दवाइयां नहीं ले रहे प्रोस्टेट के लिए, उनसे गुजारिश है कि वो अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उनको अपनी चीज बता दें और ट्रीटमेंट शुरू कर लें, क्योंकि ये कफ सिरप्स और ये एंटी एलर्जिक जो होती है, इनकी वजह से they may end in precipitated acute urinary retention. Now this is the second scenario. All the patients who have symptomatic BPH and already on treatment should stay at home. Most importantly, should follow the rules and regulation and directions of the government of Pakistan, your government of province, and should observe preventive protocols जो सबको बार बार बताई जाती है कि आपने हाथ धोने हैं सैनिटाइजर के साथ, 20 सेकंड तक पानी और साबुन के साथ, एक दूसरे के साथ सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है 2-3 मीटर तक, तो दे शुड ऑब्जर्व, और बाकी जो चीजें सोशल मीडिया और उस पर बताई जाती हैं तो उसको फॉलो करने. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड कंटिन्यू देयर मेडिकेशंस, मेडिकेशन बंद नहीं करनी. एंड इफ देयर इज साइंस ऑफ प्रोग्रेसिव बीपीएच, अगर उनकी तकलीफ बढ़ रही है, इट इज बेटर टू स्विच ऑन द कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, because that is the main thing which can prevent the patient going into acute urinary retention. Now, if the patient unfortunately develop acute urinary retention, तो उसका मरीज क्या करेगा? He should seek medical advice in the hospital. Please take only one attendant. अपने साथ पूरा फैमिली को मत लाएं, बच्चों को मत लाएं, खुदारा. Follow the hospital protocol. We are in a very special situation. हो सकता है आपको गेट पे रोका जाए, हो सकता है आपको थर्मोस्कैन के साथ स्कैन करना पड़ जाए, तो follow the instruction of the hospital जो प्रोटोकॉल है. And in hospital you will expect कि आपको emergency catheterization की जाएगी. Urethral catheter will be inserted under aseptic techniques, and then you schedule your follow-up with the Department of Urology where you are visiting. Now it is important, if somebody has a catheter, he should take care of the catheter. Usually they are put on antibiotics for a few days. You have to follow the direction of your doctor, whether or not he's going to give you a trial of removal of catheter after 4 or 5 days. You have to empty the bag with cautions and wash hand repeatedly and use sanitizer, because the rate of shed of the corona
in urine ranges from 1 to 6%. Now, this is instructions for my combat team, my pride, my residents, my doctors, my nurses, my paramedics who are involved in management, जो combat team बनी हुई है hospitals में, I salute to them. मैं खुद उस combat team का हिस्सा हूँ. We are going through very difficult times. शायद अपनी जिंदगी में हमने इतने मुश्किल time नहीं देखा. So, when a patient comes to you, my young doctors, consider every patient as positive. आप समझे कि ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है. So you have to catheterize the patient with complete personal protective equipments in emergency in OT, and would like to request the government and the hospital administration to provide these PPEs to every attending healthcare provider. And for God's sake, ये जो वाइट से गाउन हैं और गॉगल्स हैं, वो ठीक है, फेसबुक पे तस्वीर और सोशल मीडिया पे तस्वीर देने के लिए भी अच्छी है, लेकिन खुदारा इसको एज अ बायोलॉजिकल हैजर्ड डिस्पोज ऑफ करें. इसके साथ घर ना जाइए, इसके साथ और लोगों के साथ गले मत मिलिए. Now, these are the frequently asked questions, and these questions are based upon a very factual data. Because in IKD, I said, we are part of the combat team. हमने हमारे जो young doctor association वाले हैं, we are thankful to them. उनका हमारी सलाह के साथ उन्होंने एक टेलीमेडिसिन का ऑफिस शुरू किया है, and we are also part to it. And this data is based on these calls, which has exceeded more than 6,000 calls अभी तक जब से ये कोरोना का क्राइसिस आया है. And 40 to 50% are related to some sort of urological diseases. और उसमें नंबर 1 पेन के बारे में पूछा जाता है, नंबर 2 यूटीआईज के कॉल ज्यादा आते हैं, नंबर 3 पे प्रोस्टेट के यूरिनरी सिम्टम्स के जो हैं पेशेंट्स वो कॉल करते हैं. So what they ask, does corona affect kidneys? Yes, unfortunately. Corona has been reported in the very recent literature to affect the kidneys as a progressive albuminuria, and viral load in the urine ranges from 1 to 6%. Does corona affect prostate? No. फिलहाल कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये हम सर्टेन कर लें फिलहाल अभी तक कि कोरोना वायरस का डायरेक्टली कोई ताल्लुक है प्रोस्टेट के साथ. Can I have surgery during corona crisis? All the research papers जो अभी 2 महीने के अंदर पब्लिश हुई है, all the guidelines and all the advisories recommends that elective surgery should be deferred till the corona crisis is over, because the risk of the surgery is very high than the potential benefit. And this question we are usually frequently being asked, does corona spread by sexual activity? At this point in time, we don't know the specific details. Still, it should be avoided because of the droplet infections. Should be avoided. So this I conclude that the management of BPH during corona should be tailored in consultation with attending doctors. 5-ARI should be used as a combat treatment along with alpha blockers to avoid this acute urinary retention. And the definitive surgery should be postponed till the corona crisis is over. This is a slide. This is a UN number 031113333699. You can call anytime, and हमारे residents और हम लोग खुद भी होते हैं, they can through your call to us, 24/7 available. Any question? And before any question, I would end. क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया कि एक दूसरे से मिलना नहीं, अब एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बात करनी है. बकौल मीर अनीस से शेर पे मैं इख्तिताम करूँगा अपनी प्रेजेंटेशन का कि ख्याले खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को. Thank you very much.
ladies and gentlemen, now I'm open to any questions. Thank you very much, Dr. Saab. Very detailed presentation about the topic and very comprehensive. I have received many questions regarding it. तो हम एक वन बाय वन इन क्वेश्चंस को एक दफा आपके थ्रू कर लेते हैं और आप हर क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा. आई हैव रिकॉर्डेड सम क्वेश्चंस जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूं. सर, पहला क्वेश्चन तो हमसे पूछा था डॉक्टर सरवर सोलंकी ने कि हाउ टू मैनेज पेशेंट्स विद रिकरेंट यूटीआईज इवन आफ्टर टीयूआरपी. तो सर इसका आंसर दीजिएगा कि इवन आफ्टर अ टीयूआरपी प्रोसीजर अगर आपके पेशेंट्स में रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है. Okay, this is a good question. देखिए, डॉक्टर साहब को मेरा सलाम. One तो ये है कि first of all you have to ascertain के this is UTI after the TURP, because every patient, especially 40% who have a chronic retention, have some sort of blood detrusor instability, जिनको फिर यूरिन जल्दी जल्दी आता है या डिस्यूरिया होता है. वो जरूरी नहीं है कि वो UTI हो. So first of all, you make sure by urine culture and sensitivity that the patient after TURP is suffering from the UTI. And then you have to treat that patient according to the culture sensitive antibiotics for a good 10 to 14 days. So inshallah फिर दोबारा उसको नहीं होती. जी. Thank you very much, sir. I hope Dr. Sarvar Solanki sir, that is the answer to your question. Sir, the next question we are facing is there any drug to drug or drug disease interaction with the commonly prescribed alpha blockers for BPH and any possible medication for COVID-19? कोई drug interaction तो नहीं है ऐसा? देखिए, COVID-19 के लिए फिलहाल तो कोई बहुत established drug नहीं आई. लोगों ने अभी मेरे ख्याल में आज रिपोर्ट आ जाएगी FDA की कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कितनी इफेक्टिव है. दैट इज बिकॉज वो भी चूंकि लेबोरेटरी में उसने इट हैज मैनिफेस्टेड सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ दिस इस कोरोना वायरस का. कोरोना वायरल इन्फेक्शन है, दैट हैज टू बी ट्रीटेड विद आइदर इम्यूनिटी बाय दिस वैक्सीन्स और खुदा ना करे हर्ड इम्यूनिटी. तो फिलहाल तो कोई दवाई नहीं है. लेकिन जो मेडिसिन यूजुअली चूंकि है नहीं, तो अल्फा ब्लॉकर्स के यूजुअली कोई इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है बाकी ड्रग्स के साथ, स्पेशली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ, या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं रिपोर्ट हुई, एक्सेप्ट ये जो ज़ैनटेक वगैरह जो हैं जिसको H2 ब्लॉकर्स, इसके साथ विद कॉशंस यूज़ करना चाहिए. Okay. So your answer would be as such known drug to drug interaction nahi hai with any possible COVID-19 medication and be commonly prescribed BPH medications. Thank you very much for your answer. तीसरा सवाल जो मेरे पास आया वो थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और आखिरी की स्लाइड्स में आपने खुद से भी उसके बारे में जिक्र कर दिया था. That is about telemedicine. So the question is कि what is the awareness level among the patients of Pakistan regarding telemedicine? क्या उनको इतनी अवेयरनेस है कि वो खुद से एक्सेस कर रहे हैं टेलीमेडिसिन के ऊपर, या अभी भी उनका यही पैटर्न है कि वो 2, 3 या 4 अटेंडेंट्स के साथ हॉस्पिटल का विजिट करने के लिए ज्यादा माइल होते हैं? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है. जब मैं डेटा अभी जमा कर रहा था अपने टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट के जो हमारे लड़के कर रहे हैं, अब शायद मैं ये कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ वी हैव बीन रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम द पंजाब, वी हैव बीन रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम सिंध एंड इवन अब्रॉड. हम लोग पेशावर और नॉर्दर्न केपी से और साउदर्न केपी से सबसे हम कॉल ले रहे हैं और हम उनको अवेयर करते भी हैं, बिकॉज वी देयर अवेयरनेस टूवर्ड्स प्रोटेक्शन इज नॉट स्टिल एट द पार जो होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली. लेकिन जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी होप दैट इट विल इम्प्रूव. टेलीमेडिसिन में हम लोग एट द एंड एक सेशन रखते हैं फॉर द काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, बट यूजुअली वी गिव देम एडवाइजेस रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट फॉर द कॉमन इलनेसेस विच दे आर सफरिंग, बिकॉज हम चाहते ये हैं कि मेजॉरिटी मरीजों को दवाई, हम मतलब एक मरीज अगर फ़ोन करता है तो हम उसके फ़ोन पे उसकी
हमारे जो बॉयज हैं गाइज उनको सुनते हैं, उसके बाद उनको मेडिसिन हिस्ट्री के हिसाब से लिख देते हैं, और अगर हॉस्पिटल रेफर करना है तो बता देते हैं, और फिर व्हाट्सएप पे उसकी प्रिस्क्रिप्शन भिजवा देते हैं उसको। तो ये टेलीमेडिसिन इज बेसिकली फॉर मोस्टली फॉर द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस टेलीमेडिसिन वो एक सेशन में हम उनकी अवेयरनेस भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है अभी तक मैसेज में शायद ग्रेविटी ऑफ दिस डिजीज इतनी नहीं है, अभी भी लोग शायद इसको ईमान की कमजोरी समझ रहे हैं, अभी भी शायद लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ रहे हैं, लेकिन दे शुड realize this thing that even 2% mortality from this disease, खुदा ना खास्ता खाके में बदहन इतनी बड़ी है कि शायद कब्रिस्तान खत्म हो जाए। जी सर, वेरी सीरियस एंड ऑफ द क्वेश्चन। सर एक और क्वेश्चन मेरे पास है, वो भी रिगार्डिंग टेलीमेडिसिन पे ही है। जैसे आपने खुद बताया कि पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर यूरिनरी रिटेंशन किसी पेशेंट में सिम्टम्स आ गए हैं, तो should he visit the ER right away or should he wait and first of all talk to the doctors via telemedicine? What should be the right approach? नहीं, if you call up, if you जिनका भी ये क्वेश्चन है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, जब भी यूरिनरी रिटेंशन होगी इट इज बेटर अगर आप टेलीमेडिसिन वालों को फोन करोगे, दे विल आल्सो एडवाइज यू टू सी अ डॉक्टर। वो जगह डॉक्टर वैसे नहीं है जिसकी जगह आपने सिर्फ दिखाना है, वहां जाके जहां स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से कैथेटर डालने जाने की सहूलत हो तो राइट, क्योंकि अगर एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो गई है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, तो इट्स बेटर दैट यू गो टू द हॉस्पिटल नियर बाय फैसिलिटी। जी ओके सर, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक के शुरू में भी इसको एड्रेस किया था कि ऑल द इलेक्टिव सर्जरीज हैज बीन डिलेड और पोस्टपोन्ड, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स और हमारे काफी सारे पेशेंट्स, उनका भी यही सवाल है कि हमें तो डॉक्टर साहब ने टाइम दिया हुआ था सर्जरी का, तो हमारी सर्जरी अगर नहीं होती है, पोस्टपोन हो जाती है, तो उससे तो हमारी हेल्थ के ऊपर ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सर एक दफा उनको दोबारा गाइड कर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, और खुसूसी तौर पे जो जिन लोगों को टाइम ऑफ सर्जरी मिल चुके हैं, देखें कैथेटर के साथ आप 6 महीने भी रह सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर्जरी, मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाई थी कि देयर आर मोर देन 170 वेज टू ट्रीट द प्रोस्टेट, देयर आर सो मेनी क्लिनिशियन देयर, वो जो सबसे पहली स्लाइड दिखाई थी, टू ट्रीट द प्रोस्टेट, बट द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज ओनली वन, एंड दैट इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखें, जब आप एंड व्हेन समबडी हैज सजेस्टेड अ सर्जरी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सर्जरी में आजकल रिस्क ऑफ एक्वायरिंग दिस COVID-19 इज सो हाई because of this problems with the air conditioning systems in our Pakistan, which is usually placed in the hospitals. Second, we don't have a negative pressure ventilation in our OTs. And third is that if it is done under spinal anesthesia, फिर भी बात ठीक थी, लेकिन जो patient who will be operated in the general anesthesia, उसमें extubation और intubation time वो time होता है जो एनेस्थेटिस्ट एज वेल एज पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो खुदा न खास्ता इफ पर्सन इज कमिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि उसका यूरिन की ये बंदिश खत्म हो जाए, लेकिन उसको COVID-19 खुदा न खास्ता हो जाए और उससे उसकी डेथ हो जाए, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर आप महीना 1.5 महीना, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कैथेटर के साथ लोग सालों साल गुजारते हैं, तो अगर आप 4-5 हफ्ते और गुजार लेंगे कैथेटर के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को ऑलरेडी टाइम मिले हुए हैं और उनको अल्फा ब्लॉकर उस वेटिंग पीरियड में दिया गया है या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट वेटिंग पीरियड में दी गई, उसको कंटिन्यू करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं। जी ओके, सो द आंसर सिंपली इज कि अपने पेशेंट्स को गाइड किया जाए कि वो कैथेटर के साथ भी सरवाइव कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपनी कैथेटर की और अपने प्रोसीजर्स की केयर करनी पड़ेगी। सर एक और क्वेश्चन है हमारे पास डॉक्टर हसीब असकर की तरफ से, वो ये पूछना चाहते हैं कि इज देयर एनी लिटरेचर और स्टडी पब्लिश्ड
regarding COVID-19 infection secondary to urological procedures. So is there any secondary study to urological procedure? secondary to urological procedures? Acha, no. Even till yesterday, papers आ गए हैं, urological procedure के ऊपर recommendations आ गई हैं इस era में. अब इस question के दो parts हैं. Recommendation of AUA, EUA and even China, जहां वुहान में सबसे ज़्यादा patient आए. Recommendation is कि you have to prioritize the degree, the level of the surgery. You cannot ignore emergency surgeries, वो आपने करानी है. जो urology में अगर आप कहेंगे तो infected obstructed systems जो है, corneal gangrene जो है, इस किस्म की जो surgeries जो हैं, और you have to somehow do it under strict personal protective equipments. Recommendation आ गई है. उसके अलावा वो surgeries जिसको उन्होंने कहा कि मतलब you cannot defer the patient of the uro-oncology. Studies इसमें आ गई हैं कि आपने uro-oncology के patient मिसाल के तौर पे high grade urothelial carcinoma of the bladder है या renal tumor है high grade, तो yes you can go for these surgeries, radical cystectomy या radical nephrectomy, nephroureterectomy for the TCC. But for elective procedures like TURP, you can go for TURBT. But for the elective procedures like PCNL, like stent insertions, like cystoscopies, like elective procedure, pyeloplasties, laparoscopic, special laparoscopy में जिस वक्त वो गैस बाहर करते हैं तो उसको और ज़्यादा chances हो जाते हैं abdominal जो डिस्टेंट किया होता है. So that is not recommended. आपने elective surgery definitely defer कर देनी. Thank you very much, sir. There are a lot of questions still coming. I'm recording those questions. और क्योंकि टाइम की वजह से अब हमें शायद अपना सेशन कंक्लूड करना पड़े. I would just like कि आपका अगर कोई मैसेज है जो आप गेट्स फार्मा लर्निंग सेल के तवासुत से अपने पेशेंट्स को या अपने जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, आप अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं सर वो मैसेज जरूर दीजिएगा. पेशेंट्स के लिए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोरोना एक वबा है जिससे डरना नहीं, उसे लड़ना है. आप के लिए हम डॉक्टर्स, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल्स में हैं. आप खुदारा हमारे लिए अपने घरों में बैठे और जो भी आपको गवर्नमेंट जो आपको एडवाइजरी देती है उस पर अमल करें. और फॉर माई फ्रंट लाइन कॉम्बैट फोर्स, आई रियली लव यू पीपल. इस दौर में जब हर कोई भाग रहा होता है, मैंने देखा है कि मेरे रेजिडेंट्स का, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे बाकी कॉलीग्स का, मेरे रेजिडेंट्स का मोराल इतना हाई है. लाइक दे हैव स्टार्टेड टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट 24/7 बैठे हैं और वो अटेंड कर रहे हैं कॉल. They are attending the patients in triage. They are doing the emergency surgeries. So hats off to them. Inshallah, कौमें निकलती हैं इन तमाम मसलों से और हम इंशाल्लाह हमने प्रूव किया है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट, हम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, आप लोग गेट्स फार्मा जिनकी हमारे साथ बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें रेजिंग अवेयरनेस में. और अभी भी आप लोगों ने हमें नहीं छोड़ा कि हमें अवेयरनेस कैंपेन और मेडिसिन की सप्लाई के लिए. आई हैव बीन सीइंग योर प्रोग्राम्स, फैबुलस. हम निकलेंगे इस वबा से, इस शर से. इसमें हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी. हम दे भी रहे हैं कुर्बानियां. हमारे अपने डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारे अपने डॉक्टर्स वेंटिलेटर्स पे आ गए हैं. लेकिन जब जंग होती है किसी के साथ और एक ऐसे वबा के साथ जिसमें हम मजबूर हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वी कैन नॉट लेफ्ट आवर सोसाइटी कि हमें कुछ ना हो जाए. हमने अपनी सोसाइटी के साथ खड़े होना है. हम अगर आज एग्जाम्पल सेट करेंगे तो कल हमारी आने वाली जनरेशन भी कहेगी कि हाँ, हमारे पहली जनरेशन ने इतनी कुर्बानियां दी थी.
So I salute especially my young combat warriors fighting against Corona. जी. Sir, very right message. बहुत जरूरी message है, and Gets Pharma as well as whole nation thank our heroes for their fabulous support and sacrifices during this COVID-19 era. Sir, with this, thank you very much for your valuable time and valuable session. You're welcome. बहुत informative था, और I believe कि जितने भी questions आएंगे I'll be sharing with you after this session, और जो भी आपके answers होंगे तो हम उन doctors को वापस बता रहे होंगे. Sir, with this, Sure. Thank you very much. Thank you Allah very much. Hafiz. Allah Hafiz.